हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू वीएन प्रोडक्शन। ये मेरा पहले वाला स्टेयरिंग व्हील है जो VXI मॉडल के लिए आता है। इसको यहाँ पे कुछ नहीं है, जस्ट वेरी प्लेन है। बहुत ही इसको सिंपल है, खाली ये लॉक जो सिस्टम रहता है वो लॉक हम लोग चेंज कर देता है। इसको कोई क्रोम नहीं है। आप लोग अभी जो मैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट दिखाता हूँ, ये मेरा पहले वाला है। एंड दिस इज विच आई फिक्स्ड ऑफ ZXI प्लस। आप देखिए, इसको एकदम क्रोम वाला है, मतलब सिल्वर ड्यूअल फिनिश। और इसको क्रूज कंट्रोल वर्क नहीं होगा क्योंकि उसका सिस्टम अलग होता है। इट वर्क्स ओनली फॉर ZXI प्लस and rest others you can work. You need to change the coil inside, but मैंने ये प्रीमियम लुक देता है, इसके लिए मैंने चेंज किया है एंड वेरी रीजनेबल प्राइस इट इज़. सो आई विल शो यू on this video how to change, or you can fix it with the company fellows. They will fix for you and a very reasonable price it is. This steering is much cheaper than VXI model. ZXI plus steering is बहुत सस्ता है अपना VXI मॉडल से. ये आपको लेदर रैप स्टिचेस वगैरह ऑलरेडी करके ही आता है. सो यू कैन गो फॉर ZXI प्लस स्टेयरिंग इंस्टेड ऑफ VXI. लास्ट वीडियो में मैंने डैशबोर्ड चेंज किया था. दैट इज फ्रॉम VXI टू ZXI प्लस. यू कैन सी द फुल वीडियो इन माय चैनल. सो इवन दैट लुक्स वेरी प्रीमियम. दे हैव डन फॉर मी. सो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग द अनबॉक्सिंग. किती जाता इथं हय ऐकना काय ना दुसरं केलं केलं काय करता मारू तुझं काम पडा आमका आता पळय काय दोन बाहेर आणि हो आणि हो ना हे कंट्रोल त्यांचा नडपाक. Unboxing of my new ZXI plus steering. So this guy is going to fix it, and he was arguing me with the connections and all. I said you just fix it for the signals or the connections I will speak later. So ये बंदा it is very best for you to fix it from the professional service persons. You can fix it in the company also. I have ordered the steering in a company and asked them to fix it for me. I have not connected any of this connection so that I cannot avoid any warranty purpose and all. So the airbag and the horn it works, and I have not connected to any coil and all. कंट्रोल के ऊपर मेटल रखा है. इधर है वॉल्यूम सिस्टम आता है. In the next video, I will try to fix the coil also. I am going to give an order for this. I'm not sure whether ZXI plus coil fixes to VXI plus. Let me check. Control system. हॅलो सर
हय हय ओके कॉइल बसवलं येत होतं आप चेक कीजिए कि बॅटरी डिस्कनेक्टेड हो क्योंकि एयरबॅग है सो चलता नाही बाकीचे सगळे चलता पण आवाज येतो मागे खरखर का कोई भी सर्विसिंग अगर करता है तो आप थोड़ा चेक कीजिए कि वो बैटरी डिस्कनेक्ट किया हुआ है ये लगा बैटरी वाली बाजू लेंदी हाँ और स्लाइटली साउंड आ रहा है व्हेन इट रोटेट्स आई थिंक द वायर्स विच आर देयर ऑफ द कंट्रोलर्स उसको थोड़ा सा टाई अप करना था तो शायद दोबारा इसको खोल के जो वायर्स है उसको एक कॉर्नर में टाई करना चाहिए सो दैट इट डजंट मेक एनी साउंड एंड ऑल काढ लो कोण काढते आवाज येतात जो साउंड आ रहा था दिस ऑफ द कनेक्टर करून लूज इनफ तो उनको थोड़ा सा टाई अप कर देते हैं एक कॉर्नर में डाल के तो दोबारा वो साउंड ना आए सो वंस द कॉइल इज फिक्स तो पूरा कनेक्टर कॉइल को लग जाएंगे तो कोई साउंड वगैरह नहीं रहेगा स्टेरिंग स्ट्रेट आहे मारता काय क्रॉस आहे कोणाचा आहे ना ठीक आहे स्ट्रेट आहे ना एक बार फाइनली होने के बाद आप इग्निशन ऑन करके देखिए एयरबैग भी चलता एयरबैग का लाइट वर्किंग है कि नहीं है गाइज प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल